Nongjrong, a less explored location in the East Khasi Hills district in the state of Meghalaya, which is best known for early sunrise views. Good morning guys, we are going on a new location, a new destination called as Nongjrong, and we are staying in the Cherrapunji Dawki road in a Riverside resort, which is like around 50 kilometers from the Nongjrong. So we will show you once we reach there. Nongjrong is a small village having a population of just 1500 people, located 60 kilometers from Shillong. Here, the people are very welcoming and knows English very well. यहाँ पे पहुँच चुके हैं and this is my husband. Hello, hi. आते वक्त रास्ते इतने ज़्यादा मतलब कर्व थे, उसमें इतने ज़्यादा टेढ़े मेढ़े थे कि it was a little bit uncomfortable. So we had to stay at least for, we have to halt for at least 10-15 minutes. उसके बाद उसको अच्छा लगा. So Sid, how are you feeling now? Yeah, now I'm feeling good. Roads were very curvy. थोड़ा सा पेट खराब लग गया था. Now I'm okay, very good. यहाँ पे आके तो मतलब it is so nice. क्या बताऊँ आपको. थोड़ा सा आपको यहाँ पे ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ. चलिए. यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम लगेगा इनिशियली, बट आफ्टर यू कम हियर आपको जितनी भी परेशानी होगी, whatever you feel uncomfortable and all, it will all vanish in 1 second. So finally अभी एक जगह मुझे मिला है जहाँ पे मैं बैठ सकती हूँ आफ्टर सो मच ऑफ हाइकिंग. तो इसीलिए अभी मैं बैठी हूँ और बैठ के इतनी ज़्यादा यहाँ पे पीस लग रहा है मुझे. सो पीसफुल सिचुएशन हियर. You guys will love it. If you are a nature lover, then you must visit this place. This is called Nongjrong. लकीली हमें एक बॉनफायर का भी मौका मिल गया, जो कि नेचुरल बॉनफायर,
हम लोगों ने इधर उधर से इकट्ठा करके इधर थोड़ा सा चलाया, थोड़ा सा कैंपिंग का एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। This is our trip in Nongjrong. So Sid, how's it? How did you like it? It was so nice. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्या बोलूँ आपको, बयान नहीं कर पाऊँगा। मतलब इतना नाइस सीनरी, इतना नाइस बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर। अच्छा है ना। आप जितना दूर तक जा सकते हैं वहाँ तक जा सकते हैं, but you cannot go back and come back because we are having some heavy bag behind. Camera bag is there, drone is there, water bottles are there. But एक ना एक बार तो आना चाहिए आपको। आना You चाहिए। should come here once at least. Since it is a less explored, तो आप लोग भी आइए, किस बात का वेट कर रहे हैं, तो जल्दी से आइए और एक्सप्लोर कीजिए इस जगह को। सो गाइज, हम लोग वहाँ जो दूर आपको घर दिख रहे हैं छोटे छोटे, वो एक छोटा सा गांव है जो कि नोंगजरोंग गांव है। वो वहाँ से हम लोग चल चल के आ रहे हैं और आते आते हम लोग यहाँ नीचे पहुँच गए हैं। यहाँ पे विलेजर्स यहाँ से लकड़ी काट के अपने घरों में लेके जाते हैं ताकि दे कैन कुक देयर फूड। नीचे आप लोग जब जाएंगे तब आपको कुछ भी फील नहीं होगा, पर जैसे ही आप नीचे से ऊपर आएंगे फिर आपको पता चलेगा हाउ मच स्ट्रेंथ यू नीड टू क्लाइंब द माउंटेन। तो इसीलिए अपने साथ अच्छे से बूट्स और पानी की बोतल तो मस्ट आपको कैरी करना ही चाहिए इन दिस हाइकिंग। कैफ़े है लैटलूम के पास ही, तो यहाँ हम लोग लंच करेंगे, थोड़ा सा खा के फिर लैटलूम पे आपसे मिलते हैं दोबारा। गाइस, अभी हम लोग लैटलूम पहुंच गए फाइनली आफ्टर लंच। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुला खुला लग रहा है। एक्चुअली हम लोग फेब के महीने में आए हैं तो इट्स लिटिल बिट ड्राई सीजन है अभी, इतना कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बट स्टिल बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। आप दौड़ सकते हैं, पूरा इधर उधर घूम सकते हैं। इट्स लाइक फुल बहुत बड़ा जगह है, बहुत ज़्यादा बड़ा जगह है। अगर आप मॉनसून सीजन के बाद आते हैं तो ये पूरा जगह एकदम ग्रीन हो जाता है, ग्रीनरी से भर जाता है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप मॉनसून सीजन के बाद आएँ।
दैट्स इट। ये हम लोग का आज का यही ख़त्म होता है ट्रिप। तो अगले ट्रिप में आपसे फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से या फिर आपके शेयर करने से ही मुझे यूट्यूब चैनल को और मतलब बढ़ावा मिलता है, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं, अच्छे अच्छे अनएक्सप्लोर्ड जगह आप तक पहुंचा सकूं। टिल देन, stay tuned and keep subscribing to my channel Smarter